नाम पढ़ता थी नाम
सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गं इमे हि सत्कारे यथार्हम् आरोपिते अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवान् शुचिरपरिनिर्भूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुर्गतपनाकारभूते पटिगह्णातु अम्हाकं दीर्घरथं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो उपभागनकारं करोमसि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अन्धमयं बुद्धानुसतिमयं करोमसि तं कोपन भगवन्तं एवं कल्याणो किटिसद्दो अभुङ्गतो इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति। अन्मयं बुद्धाभिगीतिं करोमसि
वारहंत भरतादिगुणा वियुतो योगाभिज्ञान करुणा समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दाम्यहं तमर्णं शिरसा जिनेन्द्रम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं किममुत्तमम् पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् बुद्धस्सस्मि दासो वा बुद्धो मे सामि केसरो बुद्धस्सं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् इत्येन सच्चवज्रेण वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य ते कायेन वाचा वचसा दैवकर्मं प्रकटं धोपटिगनाथोच्च कालान्तरे संवर्धितं बुद्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्यत वेदितव्यो विඤ्योहीति आनन्दमयं धम्मादिगीतिं करोमसि स्वाखाततादिगुणयोगमसि नसीयो यो योऽग्रपाकपर्यतिविमुखभेदो धम्मोऽकुलोकपठन तदधारिधारी वन्दाम्यहं तमर वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनः शरणं खेममुत्तमम् द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेण धम्मस्सस्मि दासो वा धम्मो मे सामि केसरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा धम्मेकं प्रकटमाय धम्मोपटिगनाथोच्च कालान्तरे संवर्धितं आनन्दमयं सङ्गानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचि पटिपन्नो
भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुक्ति अट्ठपुरुष पुंगला देश भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाति आनन्दमयं संगादिगीतं करोमसि सदम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविदो हरिय पुंगल संग सेठो शीलादि धम्म पवरा सयकाय चित्तो वन्दामहं तमरिगणं सुसूदं संगो यो सर्वकालिनं शरणं केममुत्तमं तृतीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेण संगस्सस्मिदासीव संगो मे सामि तिस्सरो संगस्सहं नियादिमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संगस्य पटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यः संगो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवद्येन वद्येयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानाय यं पुण्यं पशुतं किल सभ्येऽन्तरायां माहेशं तस्य तेजसा संगो पटिगनापेक्ष कालांतरे करनीय मेत्ता सुत्ता हिंदी में सुनेंगे करनीय मेत्ता इसमें है भगवान बुद्ध के मैत्री के ऊपर वचन मैत्री भावना पर मैत्री भावना पर भगवान बुद्ध के वचन। आए हम मैत्री भावना पर भगवान बुद्ध के वचनों का पाठ करें। ऐसा करना चाहिए उसे जो अच्छाई में कुशल है और शांति का मार्ग भली प्रकार जानता है। वह सुयोग्य बने, सरल बने, सुभाषी बने, मृदु स्वभाव वाला और निरभिमानी बने। वह सदा संतुष्ट रहे, उसका पोषण सहज हो, अति व्यस्त न हो, सादगी का जीवन हो, इंद्रियां शांत हो, दक्ष हो, विनीत हो, फूलों में आसक्त न हो। कुछ भी ऐसा न करें जिसे विज्ञ जन बुरा कहें। सदैव यही मैत्री भाव रहे। सभी प्राणी सुखी हों, क्षेम युक्त हो। जो भी प्राणी स्थावर हो या जंगम, सभी बड़ी, महान, मध्यम या छोटी देहधारी हों, सूक्ष्म हो
अथवा स्थूल, दृश्य हो या अदृश्य, दूर रहते हो या पास, उत्पन्न हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी सुखी हो, एक दूसरे को धोखा न दे, किसी से घृणा न करें, क्रोध या वैमनस्य से एक दूसरे के दुख की कामना न करें। जैसे एक माता अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार वह अपने मन में सभी प्राणियों के प्रति अपरिमित मैत्री भाव बढ़ाए, सभी लोगों के प्रति अपरिमित मैत्री भावना करे, ऊपर नीचे, आड़े तिरछे, बिना किसी बाधा के, बिना वैर और शत्रुता के, चाहे खड़ा हो या चलता, बैठा या लेटा, जब तक तंद्रा विहीन है, इस स्मृति को बनाए रखें। इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। इस प्रकार वह मैत्री भावना करने वाला किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शील व सम्यक दृष्टि से संपन्न हो जाता है, कामनाओं के प्रति आसक्ति को हटाकर पुनः गर्भ में नहीं आता। We'll now listen to the discourse, which is the reading from the book Mindfulness, the Way to the Bliss, chapters 2 and 3 today. The in-breath is a natural way of gathering. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. So this is the book by Luang Por Sumedho. This particular volume is volume 2 of the anthology, and this is Mindfulness, the Path to the Deathless.
that was put together for the opening of Amaravati in 1984-85. So these teachings relate from the early 80s and late 70s. And the next couple of short chapters relate to meditation instruction on, particularly on mindfulness of breathing. So this is chapter 2 called Watching the Breath. The practice of mindfulness of breathing, anapanasati, is a way of concentrating your mind on your breath. So, whether you are an expert at it already, or whether you have given it up as a lost cause, there is always a time to watch the breath. This is an opportunity for developing samadhi, concentration, through mustering all your attention just on the sensation of breathing. So, at this time, use your full commitment to that one point for the length of an inhalation and the length of an exhalation. You're not trying to do it for, say, 15 minutes, because you would never succeed at that. If that were your designated span of time for one-pointed concentration, so use this span of an inhalation and an exhalation. The success of this depends on your patience rather than on your willpower, because the mind does wander, and we always have to patiently go back to the breath. When we're aware that the mind wanders off, we note why this is. It may be because we tend to just put in a lot of energy at first and then not sustain it, making too much effort without sustaining power. So we're using the length of an inhalation and the length of an exhalation in order to limit the effort to just this length of time within which to sustain attention. Put forth effort at the beginning of the exhalation to sustain it through that, through the exhalation to the end, and then again with the inhalation. Eventually it becomes even, and one is said to have samadhi when it seems effortless. At first it seems like a lot of effort, or that we can't do this because we aren't used to doing it. Most minds have been trained to use associative thought. The mind has been trained by reading books and the like, to go from one word to the next, to have thoughts and concepts based on logic and reason. However, mindfulness of breathing is a different kind of training, where the object that we're concentrating on is so simple that it's not at all interesting on the intellectual level. So it's not a matter of being interested in it, but of putting forth effort and using this natural function of the body as a point of concentration. The body breathes whether one is aware of it or not. It's not like pranayama, where we're developing power through the breath, but rather developing samadhi, concentration, and mindfulness through observing the breath, the normal breath, as it is right now. As with anything, this is something that we have to practice to be able to do. Nobody has any problem understanding the theory. It's in the continuous practice of it that people feel discouraged. But note that very discouragement that comes from not being able to get the result that you want, because that's the hindrance to the practice. Note that very feeling, recognize that, and then let it go. Go back to the breath again. Be aware of that point where you get fed up or feel aversion or impatience with it. Recognize it, then let it go, and go back to the breath again. Well, this is a very skillful, helpful advice when we say we set up the mind to say, I want to practice mindfulness of breathing, I'm going to do anapanasati for the next hour. Okay, beginning of the retreat, get the mind focused, just do mindfulness of breathing and put everything else aside for now. And so we set up these large spans of time, or this sort of a kind of heroic undertaking of I'm going to focus on my breath for the next hour. And so as Ajahn Sumedho is speaking here from his own experience, where he would do exactly that. He could go into his kuti or sit down at Wat Pah Pong and say, okay, now, anapanasati, the breath, nothing but the breath. And make these firm resolutions, and then the attention be sliding around all over the place. And so this became a very familiar theme in his teaching. That's one breath at a time. And I remember
during one of the retreats here in the 80s, when one of the monks was Ajahn Supato, the New Zealand Supato, said, said, Lumpur, I can't get this Anapanasati, I've been trying for all these years, been a monk for 5 or 6 years and still can't get it. Bad New Zealand accent. And so then Lumpur Sumedho said, so can you follow one inhalation? Yeah, I can do that. Can you follow one exhalation? Yeah, I can do that. Okay, that's it. That's Anapanasati. That's the whole thing. And it was one of those moments where you could feel there was a kind of almost an audible click. Like, oh, because it's so easy to think, oh, it means that I must be just watching the breath and not letting the mind wander at all for 15 minutes or half an hour or an hour. But what he was pointing out is that if you, rather than make a sort of a long span of time what you're aiming at, just aim at this one breath, not even the inhalation and the exhalation, or you'd say not even a whole inhalation, just half an inhalation, just in the beginning of the inhalation to halfway through. That's enough. Just make that your goal, and so you're making your aims very achievable, very doable, and just relaxing with that, letting the mind be content with that. Because it's that quality of contentment or a sense of ease as you are working. That is it's a mixture. And in a next chapter, but one is he's talking about effort and relaxation in more detail. But it's a way of balancing contentment with work, so that it's like I was saying in the morning reflection earlier today, how you can be walking along but be completely relaxed as you walk. You can be walking quite quickly but relaxed in the act of walking. You can even be running and be relaxed within the running. Even as your body is running, you can feel at ease, in a sense, not be going anywhere even as your body is running. That makes sense? So there's not that feeling of I've got to get somewhere, or I'm heading to that object, but rather even as there's activity going on, there's work being done, there's ground being covered, then there's a sense of ease and relaxation. So this quality of contentment or santuti is a big part of say the establishment of the skillful attitude, so that even as work is being done and effort is being made, there's almost a kind of casual attitude. Okay, samadhi, shamadhi, who cares really? It's all right. If it comes, it comes. If it doesn't, it doesn't. I'm okay. Even if you don't really mean that, just saying that to yourself can give an atmosphere of ease and set the tone of an openness and a kindliness of attitude. When the mind is caught up in gaining and trying to get something, or is locked into that achieving, then the qualities of the desire to become, bhavatanha, the desire to get rid of, they often take over. And so that even though you can sit down with great determination, like, okay, now I'm not going to move from this spot, I'm going to get samadhi, I'm going to get concentrated, that even though that resolution might be based on a skillful intention, it can be co-opted, taken over by that bhavatanha, the desire to become, that's the self-creating habits, and then that makes the effort at meditation into a fight. So it's me against my mind, or the concentration fighting against against distraction. And he doesn't talk about it in exactly these terms. One of the ways I also talk about contentment in respect to the application of effort is how loving kindness and a quality of acceptance and open-heartedness is a real foundation, the most important foundation, I would say, for any kind of concentration or any kind of insight. So that attitude of openness of heart,
with loving kindness, we often think that it means having a sense of goodwill or radiating, say, blessings or well-wishing to other beings, or having a positive sort of outgoing thoughts towards yourself. But rather like the breath has an expressive aspect, the out-breath. There's the outgoing aspect of the breath. There's also the receptive or the incoming quality of the breath. The in-breath itself has that quality of taking things in. So loving kindness also has an expressive and a receptive quality, so that the expressive quality is that may I be happy, may all beings be happy, in that sense of well-wishing. But I would say the receptive quality of metta is what I like to call radical acceptance. So it's that openness of heart, whether we like it or not. This is the way things are right now. This is how nature is. This is how life is. In this moment, it's exactly this way. And whether that's liked or disliked is beside the point, because it's this way. And so that openness of heart, that quality of acceptance, if that isn't there, it's like then there isn't the possibility of the mind attuning to the time, the place, the situation. It's always like, I don't want to start from here. I want to start from over there. You know, I don't want this body. I don't want this mind. I want that one. So that quality of receptivity, radical acceptance, then it's say an opening of the heart to is being essentially being realistic, attuning to how it is, and then on that basis of how it is, then you're able to let the mind be guided towards what is helpful and wholesome. So if what's present is a lot of physical pain or agitated thoughts, then that acceptance is, okay, today the mind is really agitated, or the body is really tense, or there's a lot of pain in the back or the leg. So then, I'm not saying that you like it or you want it to carry on that way, but what you're saying is, here it is. This is where we're starting from. This is the beginning point, and that acceptance then, say, is helping the mind to be attuned to that fundamental reality of the present, and then the guidance towards a particular object or guidance towards a wholesome qualities can be established based upon that. So one breath at a time is the encouragement in terms of development of mindfulness of breathing, and that's a kind of nonchalance, if you know that word, so kind of casual. Okay, samadhi. If it comes, it comes. If it doesn't, it doesn't. I'm okay. You know, this lifetime, next lifetime, whenever. And even if something says no, don't say that. Don't even think that. That's okay. Just to create that atmosphere, that sort of environment of say, relaxation, a sense of openness, then that creates the conditions. You're planting the causes of peacefulness. If you're determined to wipe out your defilements and force the mind to concentrate, you're planting the seeds of agitation and confusion. So if you plant wholesome seeds of peacefulness and clarity, then that's going to be the result. If the seeds that you plant are those of contention and willfulness, agitation, then that's necessarily going to be the result. Any questions, comments, reflections? Yes.
Well, it doesn't have to be a fight. You can use strength without it being a competition or not like any kind of fighting or contention. So that it's like the patience of working with a young child wants to run here, run there, and be kind of busy and noisy. But you don't. If you fight against the child or you just use aggression, then the child gets more upset, and you feel bad as well. But you can be patient, and you can apply strength. Say, no, sit here, sit there. You know, let's play sitting still. And you can use skillful means, so you're being patient, you're applying effort, and you're using your energy to work against that habit, but it's not a fight. So the Buddha's essential mode of working with the world is non-contention. So, I don't contend with the world contends with me. So I feel it's a when in that kind of situation where you see the mind overwhelmed with greed, then you don't have to be fighting against your kilesas. Oh, the mind is so excited about this food, I think I'll just put the bowl aside and watch what the mind does. That doesn't have to be a fight. It must be like an interesting experiment. That's right. Ideally, it's not. If it's a fight, then also, I know that in many Dhamma books they'll talk about that. I mean, like there's one of Ajahn Chah's called Dhamma fighting. So I'm conscious of that, and I think the Dhamma talk, he starts off fight greed, fight hate, fight delusion. So that is a way of speaking, but I think it's. I wouldn't argue with Luang Por Chah. It's not saying that he's wrong, but it's talking about that quality of resolution and like our readiness to work with that. But if you have that attitude of fighting and kind of making an argument within yourself, a contention, then that very attitude, that way of picking it up, creates the causes of more suffering, more difficulty in the future. So that it's that's why one of the greatest tools that we have is patient endurance, the paramita of patience, patient endurance, kanti paramita. But as I often say, that patience is not waiting for something to be over. It's not just being patient. I'm being patient. You know, that's will. But that can be useful in to some degree to help us stop following an unskillful impulse. But patience, which is the paramita that really carries the heart across, is a letting go of time. So that's a patience of, yeah, this is really uncomfortable, and here's the feeling of wanting it to be over, but here it is. So there's a letting go of the future. The mind is so it's really transcending time. It's not being caught into that. Won't it be nice when this isn't here anymore, and I don't have to bother with this? It's not caught into that. So there's an applying of strength, and resolution. There's adhitthana paramita, the virya paramita, the energy and resolution. But the mind is not making it into a fight. Like if you're climbing a mountain, you've got to hold yourself up, you've got to pack on, and it's really steep and rocky. You're not fighting against the mountain, but you've got to work to get up there. Your body's not going to go up on its own. So you're having to make effort. But if you say, "Oh, I'm fighting against gravity here. I'm fighting against the mountain," it's like, well,
if there's a fight going on, it's only coming from one place. But there's work is needed to be done, and effort has to be sustained, and skill to see what's the best way to get up the mountain. But the mountain is not your enemy. So similarly, those impulses of greed or aversion or fear or whatever, they're not the enemy, but they are, say, aspects of the mind's nature that can be seen as being obstructive or problematic if they're followed. So the work of training the mind is to get to know those impulses and to see the ones that are how they're destructive, how they work, and to train the mind, develop the kind of strength to not follow those. So just like climbing a mountain or going out for a run, it takes effort to sustain that, but it doesn't have to be a contention. Also, I'm very aware, in the forest tradition, there's a lot of fighting talk. Also, the Buddha was a soldier before he was a monk, so there's a lot of fighting talk in the Buddhist language as well. So, I think it's important in terms of developing skillful attitudes to practice that we see that those are figures of speech. You know that expression? It's like a way of talking. So that so you have a Dhamma talk called Dhamma fighting, or you have Ajahn Mahabodha talking about getting into the ring with your kilesas and knocking them down, and they get up again. You knock them down again until they have the kilesas are carried out on a stretcher. But yeah, that's kind of fighting talk. But it's interesting that for most Westerners, when they would hear those kind of very punchy Dhamma talks, that they would end up injuring themselves. They would be so determined to fight their kilesas, they would okay, I'm not going to move for 4 hours, and then their knees are completely wrecked. Or Ajahn Viradhamma, and he got so stressed and exhausted, he actually had a seizure one day, kind of an epileptic fit, just from lack of sleep and overexertion. So that Lumpur Cha would tend to say, calm down, V. So, because for Westerners would tend to kind of overdo it, where you would, that sort of, that kind of language of sort of get in there and fight your kilesas, often that would be, say, the style of speech that people would expect in the Thai culture would expect from the ajahns to be using that kind of rousing, what they call the warrior spirit. They expect that kind of language from the ajahns. You have a question, Enzo? It's okay, yeah, as long as you keep breathing. Again, in different Dhamma books, different teachings, they can make a different emphasis. So you should pay attention to at your diaphragm, or in your nose, or the point of the tip of the nose, or the piece of skin just above the lip. But the usual instruction that I give is wherever you can feel the breath most clearly. And if your nose is blocked, then breathe through your mouth, and then just notice where you can discern the movement of the breath most easily and most comfortably. Just focus the attention there, because it's not that there's anything really special or sacred about the breath. It's just a convenient, natural, peaceful rhythm to use as an object. It's a bit like a flag on a golf course. It's just to tell you where the hole is. It can be a blue flag, or a red flag, or an orange flag, or a yellow flag, or a white flag. It doesn't really matter. It's just
or a big flag or a small flag, as long as you can see it, it tells you that's where the green is, aim there. Okay, the next chapter is called the mantra Buddho. If you've got a really active thinking mind, you may find the mantra Buddho helpful. Inhale on Bud and exhale on Tho. So you're actually thinking this for each inhalation, each exhalation. This is a way of sustaining concentration. So, for the next 15 minutes, do the Anapanasati, putting all your attention, composing your mind with the mantra Buddho. Learn to train the mind to that point of clarity and brightness rather than just sinking into passivity. It requires sustained effort. One inhalation of Bud, fully bright and clear in your mind. The thought itself raised and bright from the beginning to the end of the inhalation. And Dho on the exhalation. Let everything else go at this time. The occasion has arisen now to do just this. You can solve your problems and the world's problems afterwards. At this time, this much is all the occasion calls for. Bring the mantra up into consciousness. Make the mantra fully conscious instead of just a perfunctory, passive thing that makes the mind dull. Energize the mind so that the inhalation on Bud is a bright inhalation, not just a perfunctory Bud sound that fades out because it never gets brightened or refreshed by your mind. You can visualize the spelling so that you're fully with that syllable for the length of an inhalation, from the beginning to the end. Then Dho on the exhalation is performed the same way, so that there's a continuity of effort rather than sporadic leaps and starts and failures. Just notice if you have any obsessive thoughts that are coming up, some silly phrase that might be going through your mind. Now, if you just sink into a passive state, then obsessive thoughts will take over. But learning to understand how the mind works and how to use it skillfully, you're taking this particular thought, the concept of Buddho, the Buddha, the one who knows, and you're holding it in the mind as a thought. You're not holding it as an obsessive habitual thought, but as a skillful use of thought, using it to sustain concentration for the length of one inhalation, exhalation, for 15 minutes. The practice is that no matter how many times you fail and your mind starts wandering, you simply note that you're distracted, or that you're thinking about it, or that you'd rather not bother with Buddho. I don't want to do that. I'd rather just sit here and relax and not have to put forth any effort. Don't feel like doing it. Or maybe you've got other things on your mind at this time, creeping in at the edges of your consciousness. So you note that. Note what mood there is in your mind right now. Not to be critical or discouraged, but just calmly, coolly notice if you're calmed by it, or if you're feeling dull or sleepy, if you've been thinking all this time, or if you've been concentrating, just to know. The obstacle to concentration practice is aversion to failure and the incredible desire to succeed. Practice is not a matter of willpower, but of wisdom, of noting wisdom. With this practice, you can learn where your weaknesses are, where you tend to get lost. Witness the kind of character traits you've developed in your life so far, not to be critical of them, but just to know how to work with them, not to be enslaved by them. This means a careful, wise reflection on the way things are. So, rather than avoiding them at all costs, even the ugliest messes are observed and recognized. That's an enduring quality. Nibbana is often described as being cool. Sounds like hip talk, doesn't it? But there's a certain significance to that word. Coolness to what? It tends to be refreshing, not caught up in passions, but detached, alert and balanced. The word Buddho is a word that you can develop in your life as something to fill the mind with, rather than with worries and all kinds of unskillful habits. Take the word, look at it, listen to it. Buddho. It means the one who knows, the Buddha, the awakened, that which is awake. You can visualize it in your mind. Listen to what your mind says, blah, 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 etc.
Goes on like this, an endless kind of excrement of repressed fears and aversions. So now we're recognizing that. We're not using Buddho as a club to annihilate or repress things, but as a skillful means. We can use the finest tools for killing and for harming others, can't we? You can take the most beautiful Buddha Rupa and bash somebody over the head with it if you want to. That's not what we call Buddhanusati, reflection on the Buddha, is it? But we might do that with the word Buddho as a way of suppressing those thoughts or feelings. That's an unskillful use of it. Remember, we're not here to annihilate, but to allow things to fade out. This is a gentle practice of patiently imposing Buddho over the thinking, not out of exasperation, but in a firm and deliberate way. The world needs to learn how to do this, doesn't it? Rather than use guns and bombs to annihilate anything that gets in the way, and then ranting and threatening each other, the geopolitical powers could learn to let go of ideological conflict. But it's a human tendency. All of us, in our personal lives, tend to hang on and squabble. How many of you have said nasty things to each other? Even in our lives, we do that, don't we? How many of you have said nasty things to someone else recently? Wounding things, unkind, barbed criticism, just because they annoy you, get in your way or frighten you. So we practice just this with the little nasty, annoying things in our own mind, the things which are foolish and stupid. We use Buddho not as a club, but as a skillful means of allowing it to go, to let go of it. Now for the next 15 minutes, go back to your noses with the mantra Buddho, see how to use it and work with it. Back to your noses. So he used to get very graphic. He'd say, like, you know, build a corral, like a fence around your nose. अनुवाद करते हैं। दूसरा चैप्टर था आनापानसति पे। आनापानसति एक मन को एकाग्र करने का, सांस पे एकाग्र करने का एक तरीका है। तो चाहे आप बहुत एक्सपर्ट हों या अभी पहली बार सोच रहे हैं और आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपसे नहीं हो सकता, फिर भी सांस को देखने का तो कभी भी समय हो सकता है। ये अब हमारे लिए समाधि डेवलप करने का मौका है, ताकि हम सारा ध्यान अपनी सांस की साथ होने वाली वेदना पे ध्यान देते हैं। तो इस समय अपना पूरा ध्यान इस पे रखिए कि सांस की एक सांस के अंदर जाना और एक सांस का बाहर आना, उस पे हम ध्यान रख सकें। इतना ही कमिटमेंट रखिए। ऐसा मत विचार करके रखिए मैं 15 मिनट तक निरंतर सांस को देखता रहूँगा, क्योंकि वो कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्येय इतना ही रखिए कि एक सांस का जाना और एक सांस का बाहर आना, बस इतनी देर तक मैं सांस को जानकारी बनाए रखने का प्रयास करता हूँ। इस साधना की जो सफलता है वो हमारी धैर्य पे निर्भर करती है, ना कि विल पावर पे, क्योंकि मन तो भटकेगा ही और हमको हमेशा वापस फिर सांस पे आना होगा। जब भी मन भटकता है हम उसको नोट करते हैं। जब हम ज़्यादा एनर्जी उसमें लगाते हैं तो उसको सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम एक अचीवेबल टारगेट रखते हैं कि एक सांस की जानकारी हमें बन जाए आने और जाने वाले की, और फिर
अगले सांस की, फिर अगले सांस की। इतना एफर्ट तो हम कर ही सकते हैं कि सांस के जाने से शुरू होने तक से सांस के बाहर जाने के समाप्ति तक, और फिर सांस के अंदर आने के शुरू होने से लेकर सांस के अंदर पूरा पहुंचने की समाप्ति तक उतना देर ध्यान रख सके, और फिर धीरे धीरे वो सम हो जाता है और हम कहते हैं कि समाधि एफर्टलेस हो गई। शुरू शुरू में लग सकता है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ करने के आदी नहीं है। हमारे मन तो विचारों में, एक के बाद एक विचारों में घूमने में आदी है। वो इसी तरह की हमारी ट्रेनिंग है। किताब पढ़ते हैं, एक शब्द से अगले शब्द जो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन आनापानसति एक अलग तरह की ट्रेनिंग है, जिसमें कि जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो इतना सरल है कि और उसमें कोई इंटेलेक्चुअल लेवल की आवश्यकता नहीं है। और ये इंटरेस्टिंग भी नहीं है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। तो ये हमारे को इसमें रुचि हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम अपना एफर्ट करें और इस सामान्य प्रक्रिया को, जो सहज प्रक्रिया है सांस की, उसकी ओर ध्यान दें। शरीर तो सांस लेगा ही, चाहे हम उसको देखें या ना देखें, क्योंकि हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें सांस के रोक के अपने कोई शक्ति बनानी है, शक्ति पैदा करनी है। हम सामान्य सांस को जान रहे हैं, उसकी सजगता बनाए रख रहे हैं उसके प्रति, ताकि समाधि का अभ्यास हो सके। इसमें कोई थ्योरी को समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। हाँ, ये बात जरूर है समझदारी की कि जब हम सांस को नहीं देख पाते और हम व्यथित हो जाते हैं, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे को देखने की कि हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, इसलिए दुख हो रहा है। क्योंकि ये इस तरह की तृष्णा ही हमारी साधना में एक बाधा है, एक निवारण है। इस तरह हर जो भी मन में भाव जागे उसको पहचानना चाहिए और त्याग कर देना चाहिए, और फिर सांस की ओर वापस जाना चाहिए। उस स्थिति को भी जाने जब मन सांस को देखने का नहीं, बिल्कुल नहीं करता, एकदम धैर्य खो बैठता है, उसको भी हम जान लें। धैर्य खो गया, मन नहीं कर रहा, और उस विचार को, उस मन स्थिति को भी त्याग दें और फिर सांस पर काम करना शुरू कर दें। ये छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर और थोड़ा अजान ने उसके बारे में थोड़ा विवरण दिया। पहले ये बताया कि कई बार शिविर के शुरू में हम ऐसा ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं कि अच्छा 1 घंटे की साधना है तो मैं 1 घंटा से निरंतरता से सांस को ही देखता रहूँगा, और इस तरह के बड़े वीरतापूर्ण ऑब्जेक्टिव रखते हैं और जो कभी चलते नहीं हैं, और फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए लुम्पोर हमेशा यही कहते हैं, 1 breath at a time। एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक भिक्षु थे जो 4-5 साल बाद अमरावती आए होंगे उनसे मिलने, और एक न्यूजीलैंड के भिक्षु। तो उन्होंने कहा उनको इतने साल हो गए, अभी भी 4-5 साल, मुझे तो बिल्कुल सांस टिकता ही नहीं ज़्यादा देर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो एक सांस को जान सकते हो? उन्होंने कहा हाँ जान सकता हूँ। और एक सांस के बाहर आने को भी जान सकते हो? हाँ जान सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बस यही तो है आनापानसति, और क्या है। अगर हम ऐसा विचार करेंगे कि मैं 1 घंटा ध्यान करूंगा और मन को भटकने नहीं दूंगा, तो फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमें एफर्ट करना है, लेकिन रिलैक्सेशन भी साथ रखनी है, और अपने उद्देश्य जो है ऐसे रखने हैं जो अचीवेबल हो, क्योंकि मन का भटकना एक स्वाभाविक सी बात है। और अगर हम इस बात को पहले से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मन भटकता ही है, तो फिर हम उसकी भटकने को भी जान लेते हैं और अपने आप सहज रूप से मन सांस की ओर आ जाता है। जान फिर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में कई लोग विकारों से लड़ने की बात काफ़ी करते हैं, फाइटिंग अगेंस्ट वॉन्डरिंग माइंड, और कई सीनियर अजान जैसे अजान महाबुआ भी इस तरह की बात करते हैं। और
भगवान बुद्ध की वाणी में भी, क्योंकि वो भी पहले भिक्षु बनने से पहले एक सिपाही भी थे, उसमें भी फाइटिंग के कई उदाहरण आते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम एक अपना उद्देश्य बना के कुछ अटेन करने का ऑब्जेक्टिव बना के रखें। ज़्यादा ये इसका ज़्यादा अच्छी बात ये हो कि हम अपना ओपननेस रखें, माइंड की एटीट्यूड हमारा ऐसा हो कि जो भी डिस्ट्रैक्शन होगी उसके प्रति भी मैत्री का भाव रहेगा। तो इस प्रकार एक रेडिकल एक्सेप्टेंस है जो भी परिस्थिति के प्रति, जो कि एक तरह की प्रज्ञा का बात है। हम ये भी मान में सोच सकते हैं कि समाधि, हम तो अभ्यास कर रहे हैं, समाधि हो ना हो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से एटीट्यूड बदल के जाएंगे तो साधना अच्छी होगी। और अगर हम अटेनमेंट का एटीट्यूड रखेंगे कि मुझे 1 घंटा निरंतरता से मन को नहीं भटकने देगा, तो कष्ट होगा। फिर कुछ प्रश्न थे, जो प्रश्न तो सुनाई नहीं दिए, लेकिन उनके जो उत्तरों में महत्वपूर्ण बात थी वो मैं आपके सम्मुख पेश करता हूँ। एक तो उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई विकारों के प्रति, जैसे मन के भटकने के प्रति, उसी तरह से हमें काम करना चाहिए जैसे छोटे बच्चे के साथ पेशेंस से काम करते हैं। आप बच्चे को डांट डपट करके सुधार नहीं सकते, शांत नहीं बिठा सकते। तो उसको शांत बिठाना तो उसको कहेंगे चलो अब शांत बैठने का खेल खेलते हैं। तो इस तरह से कुशल उपाय इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने विकारों से लड़ने की बात करें। जो अजान वगैरह कहते हैं उनका उद्देश्य यही है कि हम आलस्य को त्याग के वीर्य जगाएं, अधिष्ठान करें, ताकि साधना में जोर हो। ऐसा ना हो कि हम जरा सी दिक्कत आए और छोड़ दें। तो हमारा बेसिक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है उसका हम विरोध नहीं करेंगे, सबके प्रति मैत्री भाव रखेंगे। और ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की फाइटिंग वाली बातें जब करते हैं तो खासतौर पे जो पाश्चात्य लोग साधक आते हैं, भिक्षु आते हैं, उनको उसको अति में ले आते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया अजान वीर धम्मों का, कि वो इस पर चाह की बातों को इतना सीरियसली लेते थे कि वो बहुत ज़्यादा एग्जर्ट किया उन्होंने, नींद भी नहीं की और इस कारण से सीजर हो गया था ब्रेन में। तो फिर अजान ने उनको कहा रिलैक्स रिलैक्स। एक और प्रश्न था जिसमें शायद डिफरेंट टीचर्स की बात थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ डिफरेंट टीचर कहाँ देखना है इसको, सांस को एम्फसाइज, कोई कहता है नाक की सिरे पे देखो, कोई कहता है ऊपर वाले होठ के ऊपर देखो, कोई कहता है डायफ्राम पे देखो। तो अजान ने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी सांस स्पष्ट दिखाई दे उसी में भी सांस को देख लो, क्योंकि कोई सांस को कोई एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम एक सांस जो है एक ट्रैंक्विलाइजिंग ऑब्जेक्ट है, एक रिदमिक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दूसरा चैप्टर है मंत्रा बुद्धो, उसको पढ़ा, उसके हमने प्रश्नोत्तर के लिए नहीं रुके, शायद उसके बाद भी प्रश्नोत्तर होंगे तो वो कल देख लेंगे। तो जो चैप्टर था उसमें क्या बात लिखी थी मैं आपके सम्मुख ट्रांसलेशन प्रस्तुत करता हूँ। तो सुमेधु की वाणी है, वो पढ़ रहे हैं। अगर आपका मन सच में जो बहुत एक्टिव है तो बुद्धो का मंत्र आपके लिए सहायक हो सकता है। जब सांस अंदर जा रहा हो तो बोलिए बुद्ध, सांस बाहर आ रहा है तो बोलिए धो। इस तरह आप सचमुच में विचार कर रहे हैं, हर सांस के साथ साथ विचार कर रहे हैं। एक तरीका है कंसंट्रेशन समाधि को बढ़ाने का। तो फिर वह जान के अनुपूर्व समझ कह रहे हैं कि अच्छा अगले 15 मिनट तक आनापान सती करो, अपना सारा ध्यान इस मंत्र पे, बुद्धो मंत्र पे लगा के सांस की जानकारी बनाए रखो। तो मन को ट्रेन करो उस हद तक कि ये शब्द जो है बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, कोई हाफ हार्टेड नहीं, बुद्धो ऐसे नहीं, बहुत फुल्ली ब्राइट एंड क्लियर जैसे वो कह रहे हैं उस तरह से। सांस जा रहा है तो बुद्ध और बाहर आ रहा है तो धो। उस समय कोई और विचार ना आने दें, अपना सारा ध्यान इन्हीं शब्दों पर लगाएं। जो संसार की दिक्कतें हैं और अपनी प्रॉब्लम्स है और संसार की प्रॉब्लम्स है, उनको बाद में सॉल्व करने का विचार करना। इस समय तो इतना ही करना है, ताकि ये जो मंत्र है आपके चेतना में पूरी तरह कॉन्शियस हो जाए। आप चाहे तो स्पेलिंग को भी विजुलाइज कर सकते हैं ताकि और गहराई से मन उसके साथ टिका रहे। अगर कोई विचार बार बार आते हैं, कोई फ्रेजेस ऐसे मन में घूमते हैं,
इसलिए उसके लिए उनको भी केवल नोट करना है। जैसे अगर हमारी वीर्य कम हो जाता है तो धीरे धीरे इस तरह के विचार ज़्यादा आने लगते हैं, तो इसलिए वीर्य को बढ़ा के रखना आवश्यक। वो मंत्रा बुद्ध को भी एक ऑब्सेशन बना के नहीं करना, एक स्किलफुल तरीके से, कि एक कुशल उपाय है ताकि हमारा चित्त लंबे समय तक सांस पे टिका रहे। बस इतनी सी बात, उसके और कोई मतलब देने की आवश्यकता नहीं। और चाहे जितनी बार भी मन भटक जाए, कोई चिंता की बात नहीं, आप नोट कर लो, हाँ मन भटक गया, और फिर वापस अपने आप मन आ जाएगा। और अगर मन कहे कि नहीं मुझे बुद्धो नहीं बोलना है, तो वही नोट कर लो, अच्छा ये मन की इच्छा नहीं है ये बोलने की। मन चाहता है कि मैं यहाँ पे कोई एफर्ट ना करूँ और रिलैक्स करूँ, उसको भी जान लीजिए कि ये मन की स्थिति है। जो भी मन की स्थिति है उसको जानते रहिए और अपना काम करते रहिए। जो समाधि के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि हम मन के भटकने को बुरा मानते हैं, और हमारी सक्सेसफुल होने की जो तृष्णा है वो स्ट्रांग रहती है। फिर उसमें तो फिर कहते हैं कि जो साधना है, प्रैक्टिस जो है, वो विल पावर की बात नहीं, प्रज्ञा की बात है। क्योंकि साधना से आप जान सकते हैं कि आपकी कमियां कहाँ हैं, कहाँ पे आपका मन भटक जाता है, कहाँ उनमें खो जाता है, और किस तरह के आपके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो भी आपको सारे मालूम पड़ते हैं। उसका मतलब नहीं कि आप उन कैरेक्टर ट्रेट्स को कि छिद्रान्वेषण करें अपने बारे में, अपने प्रति क्रिटिकल हो जाए, बट जहाँ समझने के लिए, ताकि वो जो विकार हैं वो आपको अपना गुलाम ना बना सके। तो इसलिए उनको अवॉइड नहीं करेंगे, जो भी हमारे विकार हैं उनको उभरने देते हैं, और केवल उनको जानते हैं, और उनको जान के उनके प्रति त्याग का भाव, उनको लेट गो। ये बाण शब्द का अर्थ जो है ठंडक कहा जाता है, और ये ठंडक किस तरह की, कि हम अपने राग द्वेष से चिपक नहीं रहे। तो जब राग द्वेष के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो चित्त अपने आप शांत हो जाता है। तो ये शब्द बुद्धो जो है आप अपने सामान्य जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते भी उल्टे सीधी बात सोचने से अच्छा है कि भगवान इस बुद्धो शब्द का उच्चारण करें और समझें कि इसका अर्थ ये है बुद्धा, जो जानने की हमारी, जो जानता है, मतलब जो हमारी जानने की नैसर्गिक क्षमता है। मन में चाहे किसी भी तरह के विचार आते रहो, तो चलते नहीं, आप उसको जानते रहिए, देखते रहिए, और बुद्धो शब्द का उच्चारण करते सांस की जानकारी बनाए रखें। बुद्धो शब्द इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे जो विचार हैं उनको दबा के बंद कर दें, एक कुशल उपाय की तरह है। हम तो बहुत अच्छे से अच्छे टूल्स को भी लोगों को नुकसान करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का सजग रहना चाहिए कि ये भी टूल जो है विकारों को मारने का कोई टूल नहीं है। इस उदाहरण के लिए कहते हैं हम तो एक सुंदर बुद्ध रूप को भी ले सकते हैं और किसी के सिर फोड़ सकते हैं उससे, तो उसको बुद्धानुस्मृति नहीं कहते। और हम इसी तरह का काम कर सकते हैं अगर हम बुद्धो शब्द को अपने सारे विचारों को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए करते हैं, वो अनस्किलफुल होगा, वो अकुशल बात हो जाएगी। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को समाप्त करने नहीं आए, लेकिन चीज़ों को अपने आप उनकी फेडिंग हो जाए, अपने आप उनका निरोध हो जाए, उसको देखना चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हमारी सारी साधना एक कोमल साधना है। तो अगर हम बुद्धो शब्द का इस्तेमाल किसी बेचैनी के कारण, परेशानी के कारण नहीं कर रहे, लेकिन जानबूझ के समझदारी से कर रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो सारे संसार को इसको जानने की ज़रूरत है। इस समय संसार में जैसे झगड़े हो रहे हैं, मशीन गन, न्यूक्लियर बम और ये सब चीज़ें लेके एक दूसरे को मार रहे हैं, उससे अच्छा हो कि सब लोग बुद्धों का अभ्यास करें ताकि मन शांत हो जाए, और हम जिस तरह की कड़वी वाणी एक दूसरे से कहते हैं वो ना कहें। हम भी तो अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं ना। आप लोगों में से कितनों ने किसी को रिसेंटली बहुत कड़वी बात कही होगी जिससे उसको कष्ट पहुंचे?
उसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया हो, क्यों? वो भी कब? क्योंकि उसने आपको कोई ऐसी बात कह दी कि आप नाराज हो गए। तो आप इसलिए इस शब्द का उदाहरण कि एक डंडे की तरह नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम सारे विकारों को ठोक के बंद कर देंगे। आप अगले 15 मिनट तक आप मंत्र बुद्धों के आधार पर साधना करेंगे। यहाँ पे समाप्त हुआ। अब उपेक्षा भावना का अभ्यास करते हैं। उपेक्षा ब्रह्म विहार, सभी ब्रह्म विहारों का सिरमौर। आपने अभी सुना होगा कि जैसे कैसे कुसुमेधो या नम्रो कहते हैं मेत्ता फॉर ऑल कंडीशंस, जैसी भी मन की स्थिति हो उसके प्रति मैत्री का भाव रखें। तो उसी को एक्चुअली मन की विभिन्न स्थितियों के प्रति मैत्री के भाव को ही उपेक्षा कहते हैं। इसी कारण से शायद मैत्री भाव को इतना महत्व दिया जाता है कि वो सद्भावना का, सबके प्रति सद्भावना जो है दुखियों के प्रति करुणा के रूप में प्रकट होती है, और जो सुखी हैं उनके प्रति मुदिता के रूप में प्रकट होती है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए उपेक्षा भावना। उपेक्षा भावना का आधार कर्म सिद्धांत, जो लोकीय प्रज्ञा है, लोकीय सम्मादिट्ठी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम ये ठीक से समझ जाएं और हमारे मन में बात आत्मसात हो जाए, अपने अनुभव के आधार पे, अपनी प्रज्ञा के आधार पे, भगवान की वाणी को पढ़ने के आधार पे, कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है वो हमारे कर्मों के फल के स्वरूप ही आ रही है, तो हम अपनी विषम परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते, मन में द्वेष नहीं जागता, समता बनी रहती है। इसलिए कर्म सिद्धांत को चैंट करना, समझना उपेक्षा भावना के लिए रिकमेंडेड है। तो आए हम काम सिद्धांत को एक बार फिर विधिवत चैंट करते हैं। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणम् यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। हम अपने जीवन का भी अवलोकन कर सकते हैं, हाल फिलहाल रिसेंटली
किसी परिस्थिति में मन बेचैन हुआ हो तो उसको याद करके उपेक्षा भावना का अभ्यास कर सकते हैं। और यही भाव अपने मित्रों के लिए, परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए तो ऐसा करके मन में उपेक्षा भावना और शरीर पे भी उसका प्रतिबिंब वेदना के रूप में, तो थोड़ी देर अपने मन ही मन उपेक्षा भावना का अभ्यास करते हैं। उपेक्षा की जो सिमिलीज दी जाती हैं, पुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, ये उसकी डेफिनेशन कि लोक धर्मों के स्पर्श से चित्त हमारा कंपायमान नहीं होता, उसको भगवान उत्तम मंगल कहते हैं। तो ये उपेक्षा भावना और इसी तरह की सिमिली रतन सूत्र में यथा इंद्रखीलो पथविंसितोसिया चतुर्विवाते असंपकंपियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान अवेच्च पश्यति। तो जो चार आर्य सत्यों को निरंतरता से देखता है, अर्थात अनुभव से आधार पर समझता है, उसका चित्त उसी तरह से किसी भी परिस्थिति में कंपायमान नहीं होता। जैसे एक बड़ा खंभा धरती में गड़ा हुआ, किसी भी तरह से किसी भी दिशा में वायु चले वो हिलता नहीं। तो इन उपमाओं के आधार पे चित्त की कैसी अवस्था होनी चाहिए हम ठीक से समझ सकते हैं और प्रयास करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारा मन भी कंपायमान न हो और सभी का मन इसी प्रकार से समता में रह पाए, ऐसी शुभेच्छा। असंगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं
युद्धम मदोतिरियं संबदि संबद्धताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन हरित्वा विहरति। हम विपुल महान असीम उपेक्षा भावना दसों दिशाओं में व्याप्त करते हैं। दसों दिशाओं के प्राणियों को याद करके ये शुभेच्छा कि सभी की मन उपेक्षा से परिपूर्ण हो और हमारे अपने मन भी परिपूर्ण हो। उपेक्षा भावना में विहार करें बगैर किसी वैर के, बगैर किसी द्वेष के। तो अब थोड़ी देर दसों दिशाओं में एक एक करके इस भाव को व्याप्त करते हैं। पहले अपने प्रति, फिर सब चारों तरफ। सभी
प्राणी हम सब दृष्टि सम्यक हो, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जितनी सम्यक होगी दृष्टि, सत्य को ठीक से देख पाएंगे तो चित मन चलायमान नहीं रहेगा। इसलिए इसका समापन करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। सर्वे सत्ता सुखी होवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमः, मा किञ्चित् शोकमागमः, मा किञ्चित् दुःखमागमः। आप सत्र का समापन करेंगे तो आप भी यू कैन ज्वाइन विद अस। अपने को अनम्यूट कर लीजिए एंड यू कैन डू भवतु सर्वं मंगलम टुगेदर। हार्मनी बनाए रखने के लिए पहला शब्द हम बोले, उसके बाद आप ज्वाइन कर लें तो मिनिमम डिस्टर्बेंस होगी। भवतु सर्वं मंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सदा सोति भवन्तु ते। अरहं समागं बुद्धो बुद्धं भगवन् सावक नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। नमस्कार। नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं आप सबको। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेट अस होप इंडिपेंडेंट आल्सो। इंटरनल इंडिपेंडेंस होगी जब राष्ट्र होगी तो लेट अस ऑल वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू आंटी जी। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.